You have to use the boxes. Their structure. It's no instruction here. Yes. It's easy to make also. Shoe box. Use pen. Because see, right now no structure. They don't know what's going on. Confusion. They're not learning. Very good. Assalamualaikum. Problem? Yes. I think his problem is dyslexia. Cannot read. One solution. And forget Things. Okay. Echolalia. No. Just today I gave him the test and tomorrow he can remember. Okay. So when actually he has a problem in remembering verbal instructions. But if you give him a timetable and you make him write everything and you say this is your timetable, you have book, everything is written here, make him follow that. He will not forget. Visually it should be there written down. It should be written down. Verbally he will forget. I've seen many cases like this. And also dyslexia, like you see when he read, the letter moves. So he cannot read. So when you give him stuff to read, you make sure it is computer type. He will read the black and white very clear. And also if he still has problem in the reading and the clumsiness, then you give him glasses, yellow color glasses. Like ultraviolet, UV. Ultraviolet sunglasses. Yeah. And then make him read. It will work. It really works. एक चीज डिसलेक्सिया में हमने नोट की है, बहुत स्ट्रेंज बात है कि जब रीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो हम येलो कलर की सनग्लासेस होती हैं जो अल्ट्रावायलेट होती है वो पहना के पढ़ाएं तो बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं. मैं लिखा है ये येलो कलर अल्ट्रावायलेट होना चाहिए. येलो रंग की आती है सनग्लासेस अल्ट्रावायलेट वाली. हाँ यूवी येलो कलर सनग्लासेस specifically for dyslexia because the letters move. Okay, clumsiness भी खत्म हो जाती है. Clumsiness भी खत्म हो जाती है dyslexia के अंदर. Happens. Amazing work. लेकिन उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है. हाँ. वो बाकी Visual memory, not verbal memory. Make him write down. बहुत अच्छी है. Make him write down everything. क्योंकि जब मैं Schedule. इंस्ट्रक्शन से जो है बच्चों में स्टार्ट है. हाँ. वो नहीं आ रही स्टोरी आल्सो. Yes. If he can read it, it's perfect. With the cartoon on it, so make it exciting, fun. Sticker. If you use अच्छा, आप ये stickers. बताएं कि अगर हम लोग ऐसे बच्चों के लिए अगर इस तरह लाइन वाली कॉपी यूज कर रहे हैं तो ये हाँ. ठीक है या प्लेन? आप किसको प्रेफर नहीं, करें? आप एक ही फॉलो करें और कोई कोशिश करें कि प्लेन हो इसका विद लाइंस ड्रॉन मैन्युअली. इसका रीजन ये है कि ये जो लाइंस है ये कंफ्यूज करेंगी कि व्हाट आर दे फॉर, क्योंकि वो लाइन पे तो लिख सकते हैं. तो इट्स बेटर नॉट टू यूज एंड मेक द लाइन योरसेल्फ. प्लेन पेन पेपर वाइट खुद लाइन स्पेस की लाइन स्पेस ताकि वो लिख सके. মানে এত বড় যেটা মেশিনে টানা হয়. Because see the line is so small, you cannot write small. This is why. He's Tanvir Alam, non-verbal, Yes. hyperactive, father. Correct. উনি কথা বলেছে. Yes. আর টিচার কোনো প্রবলেম বলবো না? Now he's less हिंदी attentive. में आप बोल सकती हैं. Less attentive because see he should face the yeah or the wall. That's why. This is why. ও এদিক No, like he would be sitting here and you would be sitting there, so he is facing the wall. টেবিলটা এভাবে Yeah, because he is looking outside. He's like, what's going on here? You know? ওকে. Yes. এটা কিন্তু আমাদের সব বাচ্চাদের জন্য. Even he is looking at the outside. You know? বুঝছেন ম্যাডাম? চেঞ্জ করতে হবে. He follows the command. Follows the command. Toilet, eating. No, he's fine. He's fine. He's fine. Yeah, he is fine. He's fine. He was saying Switch. ওকে এখনই করে নেন. ওকে. তানভীর একটু উঠো. Yes. Now he's very much attached to me. Yes. Okay. It is your smell.
He like the smell, yes. So if you use some kind of aftershave or some perfume also, you can put in other objects. He will be attached to that also. They smell perfect, 100%. Smell, oh yes. The door is very near. ও চেয়ারে বসে চাই না And also some kind of partition maybe attached so that he is not ও মুখ distracted. দিয়ে যে লাগা ঝরছে এটা খেয়াল করেছে এটা মাছ ইদানি হ্যাঁ ইদানি আমি দেখিনি আজকে ইদানি দেখছো লাগা না এটা ওইটা কারণ হতে পারে এইটাই তো আপনি কি প্রবলেম ফেস করতে বলছেন আপনি প্রবলেমগুলো বলেন ওই যে ওই রেনফোর্স আমরা তেমন একটা পাই শুধু গাড়ির চাকা হিসেবে আর পুরো ऐसे ही ब्लॉक है Hyperactive. So then you measure how much can you sit down. It all actually depends upon what's happening. You know, sounds, in looking outside, environment, some people shouting, the sounds actually. If he has a sound problem, try putting the headphones on for like a few minutes and using the pictures visually, you know, with the boxes and structures, then do the activity. Or to have some kind of partition so that the sound is coming, so it is all closed door when he speaks or something like that. আপা ও যখন বসবেই না তখন কি দাঁড়িয়ে কি আমরা কাজ আদায় করতে পারবো अच्छा अगर वो नहीं बैठे Yes. तो क्या हम लोग वो खड़े होकर अगर काम करना चाहे तो क्या उस हालत में काम करना चाहिए नहीं, मगर उसको फिर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा. That's okay as long as he is not moving around. नहीं अगर वो इस जगह ही में अगर खड़े होकर हाँ, काम करना this is चाहता है fine. This is fine. हाँ, yes. ये नहीं कि वो दूसरी जगह अगर खड़े होकर काम करे वो नहीं हाँ, लेकिन इस ये जगह allowed है. हाँ, it's fine as long as he কিন্তু goes. জায়গা হইতে হবে এটা আপনি এই এরিয়াতে ও দাঁড়ায় কাজ You know what করতে you can পারবেন do? You know what you can do? You can make like feet and stick them on ground and say stand Yes, here. yes, like- So he like hands. Yeah, Okay. yeah. So he stay here. फिनिश तो बच्चा Finish दस point किया वो नहीं है बस क्या है नीचे देखिए Color circle.